वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं BYD Seal का। दिस कार ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ फीचर्स। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ दिस कार एंड ऑल द अदर डिटेल्स. Special thanks to Speed BYD for helping me making this video. If you want to check out any BYD product, I will drop all the contact details in the description of this video. So now let's start with the video. So let's start with the video. So here we have a key fob of this vehicle. You can lock, unlock, and you can release the boot, and you can start the vehicle. So this is how it sounds when you lock the vehicle. And if you hold this button, this car will start by the remote, and you will not know because ये बिल्कुल ही sound produce नहीं करती है. So now the car has started. As you can see, the indicators are blinking. So now let's start with the front look. So this car looks very amazing. Aerodynamics of this car is also amazing. So here you have LED DRLs and you have a curvy DRLs over here. You have two front parking sensors and यहाँ पर है हमारे like projector LED headlamps. So ये भी आप देख सकते हैं कि क्वालिटी कितनी अच्छी है. And यहाँ पर फ्रंट पे लाइक हमारे पास 50 लीटर का एक दिस इज द 50 लीटर ऑफ ट्रंक. सो यू कैन स्टोर एनीथिंग ओवर हेयर. BYD branding over here and ये पूरा hard plastic है but like पूरा covered है. And here you have washer storage so you can store water. This car also comes with this NFC feature so you can tap your NFC card over here without the key and the car will get unlocked. So this car comes with 4 colors. So one is Arctic blue जो कि अभी आपके सामने है. Then we have Aurora white. फिर आता है Atlantis grey and then last we have Cosmos black. सो ये अभी हमारे सामने है आर्टिक ब्लू कलर जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट एंड कूल लग रहा है अभी दिन में. एंड जो कॉस्मोस ब्लैक है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक माफिया लगता है बिकॉज ये कार्स के जो DRL जब जलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक देते हैं उसको उस टाइम पे. सो नाउ दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द फ्रंट. मुझे ये बहुत पसंद आई स्टार्टिंग से बिकॉज इसका लाइक एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं इस कार के. एंड ये बिल्कुल भी टेस्ला जैसी नहीं लगती है. लोग पीपल कंपेयर दिस कार विद द टेस्ला बट आई थिंक इट लुक्स बेटर देन टेस्ला and in reality it looks absolutely amazing. So now when you go to the side of this car, so here you have 19 inches of alloy wheels. So ये यहाँ पे लेकिन अब देख रहे हैं आजकल सारी इलेक्ट्रिक कार्स में ऐसे फ्लैप्स आने लगे हैं टायर्स पे. सो आई डोंट नो व्हाई बट मेरे को ये मेटेलिक एलॉय ज़्यादा पसंद आते थे बट ये मे बी टू रिड्यूस द ड्रैग. सो आई डोंट नो क्या है इसके पीछे साइंस है बट हाँ बट ये मेरे को इतने पसंद नहीं आते बट ये मस्त लग रहा है. 19 इंचज़ के अलॉय व्हील्स हैं. यहाँ पे हमारे पास BYD डिज़ाइन बिकॉज BYD डिज़ाइन इट्स ऑब्वियसली यहाँ पे दे हैव ब्रांडिंग. दिस इज द ORVM ऑफ द व्हीकल एंड ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है. यहाँ पे यू हैव फॉर द ADAS सो लाइक इफ समबडी इज क्रॉसिंग यू फ्रॉम द साइड सो इट अलर्ट्स यू. एंड when you lock the vehicle handles goes in and when you unlock the vehicle it comes out like this. So ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम और मस्त लगता है. I don't think so like किसी और कार में आते हैं ऐसे. मे बी टेस्ला में आते हैं ऐसा. So on the back, so my favorite part is this. From the back it looks absolutely amazing. Like you have this LEDs over here and you have connected LEDs. So ये बहुत ज़्यादा मस्त लगती हैं यहाँ पर. And you can see here you have BYD Seal 3.8 seconds branding over here and you have 4 parking sensors in the back. Here you have shark fin bumper. So ये काफ़ी sporty feel देते हैं इसको. You can see and we will open the boot of this car. So all you have to do is to press this button. Now boot will open automatically. So now yeah, here you have like 400 liters of space, so which is quite nice for a sedan. And here you also have some other space as well. So यहाँ पे कोई spare tire नहीं आता but you get the puncture repair kit. Now I have to close this. So all I have to do is to press this button. The boot will automatically close just like this. Here you have some air curtains but which are not functional at all. I think they are just showcase. So ये functional नहीं है. This car comes with a dual motor setup and it is an all-wheel drive car. As you can see here, it is mentioned over here as well. So it comes with a 82.56 kilowatt of battery. So if you charge this car for about 15 minutes, it will be ready to go for around 200 kilometers minimum. So you can see that it has supports DC and AC charging as well. So I will open this. So here you can see this is for the DC charging and this is for the AC charger. Motor produces 670 Newton meter of torque with 560 PS
which is very rapid and very fast, and you can drive this car from 0 to 100 within just 3.8 seconds. So it is super fast. If you compare it with its competitors, it is super faster than them as well. So guys, on the top, you don't have a roof at all. It is just a full sunroof. So it is made up of silver plated glass, and ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है टॉप से. So ये कार का जो ground clearance है, it's just 145 mm. So you can see it is a sedan, so it is very aerodynamically made. So इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, and you can see the roof of this car, shiny. So guys, when you enter this car, you can see this premium door over here. It comes with DYN audio. So you have this door handle. It is soft touch. You can see it is like kind of Alcantara finish. You have piano black finish. Here you have ambient lighting. काफ़ी dim है because अभी काफ़ी यहाँ पे रोशनी है, तो इसलिए आप देख नहीं पा रहे होगे. Here you have all the function of ORVM doors and lock and unlock, child safety. This is to release the boot of your vehicle. Again, another speaker. It is a tweaker, and ये leatherette finish है. It is very soft touch as well. And here you have bottle holder, and here you have BYD branding. And this is again the piano black finish, so everything looks very premium in this car. Here you have 6-way adjustable, you can electronically adjust this car, you can move it, and you can also change the under thigh support as well, just like this. So the car looks absolutely amazing from the inside. So you can move it like this as well, you can push it forward and backward as well. Very easy to operate. So now let's sit in the vehicle and talk about all the details. So inside, the noise insulation is very good. Like you cannot hear anything from the outside right now. So यहाँ पे हमारे पास ADAS के functions हैं. Yeah, lane keep assist, and you can open 360D camera here. You can just click on this, and this is how the 360D camera looks. So इसकी quality काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है BYD की, एंड काफ़ी एक्यूरेट है. बिल्कुल मतलब ट्रैफिक में तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होने वाली किसी को, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है इसका 360 कैमरा. एंड यू कैन ऑल्सो सी द अंडर द व्हीकल, बिकॉज इसके नीचे भी एक कैमरा लगा हुआ है. सो यू कैन सी वॉट इज़ अंडर योर व्हीकल एज वेल. So one of the biggest highlight of this car is this. So once you click this button, the screen rotates like this. Yeah, just like this. So you can change it according to your preference. You also have like 2 wireless charger here, and this is the gear knob. So ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है बिल्कुल. You can change it from drive mode to neutral and rear. So ये बहुत अच्छा है. Again you have start and stop button. You have AC control here as well, and you have auto hold and hill hold. You can also change the mode of this vehicle. You have parking for the hazard lamps. Here you have 2 twin cup holders. So you also have this big storage here as well under your. This is also leatheroid, and you can also place your card over here, NFC. So guys, ये लगती है अंदर से हमारी BYD सील. सो यहाँ पे काफ़ी सारे हार्ड बटन्स हैं जो कि बाकी कंपेटिटर्स में नहीं है, जो कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि सारे टच बटन नहीं है. टच बटन भी हैं, लेकिन आपके पास एक फिजिकल बटन्स भी हैं जो कि काफ़ी एज कर देते हैं कंट्रोलिंग ऑल द व्हीकल. सो हेयर यू हैव अगेन एवरीथिंग हेयर इज सॉफ्ट टच. दिस इज सॉफ्ट टच leatherette, this is leatherette, this is Alcantara, this is again leatheroid, this is also Alcantara. Here you have ambient lighting, AC vents. This is also leatheroid. Here you have auto dimming IRVM, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है मेरे को. And here you have big moon roof or sun roof, whatever you can call. You have big roof. Here you have mic. You just have to touch it. Like it's not even moving. If you touch it, it will start and it will turn off. Here you have sun visor. You can just open it, and you can see you have lights here as well. So this is how the sun visor looks. You also have sun visor here as well. So once you open it, so it is broken right now, but yeah, you can see light is there. So it is also very premium. So now let's explore the infotainment of this car. So here you can change the mode. So you can change it to Bluetooth, SD card, or maybe you can explore your local files. You have AC controls here as well. You can change the temperature. It comes with a dual zone climate control. You can change and switch the temperature. तो यहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल हैं. So this is the app of this vehicle. So you can wirelessly connect your Apple and Android phone. So guys, this is how it looks from the inside. ज़्यादा कुछ अभी मेरे को दिखाने को मिल नहीं रहा है इसमें. Okay.
You heard, he said I'm here. So यहाँ पे like आप voice control, voice command भी use कर सकते I'm हैं. listening. Sorry. Okay, so here you have like ये जो इतना बड़ा ग्लास है, सनरूफ है, ये ओपन नहीं होता है, बट इसमें कोई सनशेड भी नहीं आते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डिम. इफ़ यू गो इन द लाइक डे लाइट में, सनलाइट में आप जाते हो ना, तो इतनी धूप अंदर महसूस नहीं होगी बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है. अभी आपको कैमरे में लग रहा होगा लाइट है, लेकिन ये वैसे काफ़ी डार्क है. So this car comes with the ventilated seats for both front and rear passenger as well. So बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है इसका इंटीरियर. हर जगह से लाइक यू कैन सी एट एनी स्पेस एंड यू विल नॉट सी एनी चीपनेस because everything is soft touch. Even this thing is soft touch, this is soft touch, this is soft touch, this is again soft touch, this is Alcantara. Everything is soft touch over here and this is screen also rotate जैसे कि मैंने आपको दिखाया था. तो काफ़ी सारा like premium, I think one of the most premium BYD cars you will see in the market right now. So now let's sit at the back side of this car. So let me go. So in and out is very easy. ओह ज़्यादा तेज़ बंद कर दिया मैंने. सो ये है हमारी कार अंदर से एंड ये देख सकते हो आप, बिल्कुल स्पोर्टी वाली हमारे पास सीट है. यहाँ पे यू हैव सम स्पेस टू स्टोर मैगजीन होल्डर. अगेन यू हैव एम्बिएंट लाइट एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ दिस. अल्कंतारा फिनिश, ट्विकर, you have speaker, one touch up and down window. Again काफ़ी ज़्यादा comfortable है इसकी seats and spacious भी है. You can see the leg room is good. Under thigh support is pretty decent. You can place your phone over here. You have AC vents and you have some storage here as well. So you can store. Okay, so you have C type and USB type charger here as well. So यहाँ पे कोई hump भी नहीं है, तो like even the middle passenger can sit nicely. Here you have armrest with the twin cup holder, and it is the seats are fully leatherette, so you will not feel any discomfort. Everything is really nice and it comes with the safety. You have airbags over there, airbags over here, everywhere. You have like 6 airbags in this car. Here you have light control, so this is reading lamps, you can close it, so I have to close it off from there. ये कार अंदर से बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है एंड पीछे से बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है. यू कैन सी द लाइट ओवर देयर, लाइट ओवर है. एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी प्रीमियम अनलाइक टेस्ला. टेस्ला इज़ ऑल्सो प्रीमियम, बट यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. यू हैव एयर बैग, सेफ्टी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं. इवन दो पीपल क्रिटिसाइज़ कि ये चाइनीज़ है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, सेफ्टी नहीं है, रिलायबल नहीं है, बट आई विल से इट इज़ वेरी वेरी रिलायबल बिकॉज इसके रिव्यूज़ मैंने देखे हैं बाहर के भी, जो जहाँ पे ये कार ऑलरेडी पहले से आ चुकी थी जिस कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं इसे. एंड रिव्यूज़ आर लाइक 90% ऑफ देम आर totally positive. This is the headrest, so you get headrest for the middle passenger here as well, and ये भी adjustable है. So this is also adjustable headrest for the middle passenger. You don't get any boss mode. Adjustable seat belts. This car comes with the 3 variants. One is a dynamic, then you have premium, and then performance. This is the performance top model. The pricing of this vehicle starts from 41 lakhs and goes up to 53 lakhs 15,000. सो ये वाला जो हमारे पास वेरिएंट है, इसकी जो प्राइस है ये है 53,15,000 एक्स शोरूम. सो इट कम्स विद 82.56 किलोवाट ऑफ बैटरी. द सेकंड वेरिएंट which is the premium one, it also comes with the 82.53 kilowatt of battery, but the base model which is the dynamic, it comes with the 60 kilowatt of battery. अगर आपको वीडियो पसंद आए then please like and share this with your family and friends who are considering buy BYD. And if you want to watch more ownership and reviews of this car, then do subscribe my channel. I will be coming up with more videos like this in the future. Peace.